Good morning, children. Welcome you all to your English literature class. I am sure that you all are staying indoor and washing your hands regularly. Today, I will start with a new lesson. It's a very interesting story, and you all are surely going to enjoy it. The Hungry Bear. The name of the story is The Hungry Bear. Once upon a time, there was a bear. He was very hungry. Can you see this little bear? He is very cute and he is very hungry. Now he goes to the market. Can you see a market? And what does he see in the market? There are different kinds of fruit in the market. Let's name them. You can see oranges, mangoes, apples, pineapples, bananas, pomegranates, guavas, and watermelons. So, when he looks at all these fruits, he picks up one fruit, that is a mango, in one hand. And then he picks up another fruit, that is orange, in the other hand. So he picks up both the fruits. They are mango and orange. When he picks the both, he says, "These fruits are too small to fill my tummy." So what does he do? He picks up bigger fruit. And which is the big fruit? The watermelon. So when he picks up a big fruit, big watermelon, and eats it, and it was the entire watermelon. And now, after eating a big watermelon, his tummy is full. So, this is the story. I hope you have understood. एक समय की बात है, एक छोटा सा जंगल में एक भालू था जो कुछ दिनों से खाया नहीं था। वह बहुत भूखा था। उसने अपने आसपास कुछ खाने को ढूंढता मगर कुछ मिलता भी नहीं था। उसने सोचा बाजार में बहुत सारे फल मिलते हैं, क्यों ना बाजार जाकर वहाँ से अच्छे अच्छे फल खाया जाए। अब वह अपनी भूख मिटाने के लिए बाजार जाता है। वहाँ जाकर ढेर सारा फल देखकर वह बहुत खुश होता है। संतरा, आम, सेब, अनानास, केला, अनार, अमरूद और तरबूज जैसे फल देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। एक फल की दुकान में जाकर जल्दी जल्दी में उसने अपने दोनों हाथों में एक एक फल उठा लिए। अब उसके दोनों हाथों में एक एक फल होता है, एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में संतरा। अब उन दोनों फलों को देखकर वह थोड़ा निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसने कहा, यह तो मेरा पेट के लिए बहुत छोटा है और मैं बड़ा जानवर हूँ, भालू जो ठहरा। और फिर वह एक बड़ा फल छांट कर उठा लेता है। पता है वह बड़ा फल क्या था? वह बड़ा फल तरबूज था। बड़ा फल देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और उस बड़े जानवर भालू ने वह बड़ा फल तरबूज को पूरा खाकर अपना पेट भर लेता है और खुश होकर अपना घर वापस चला जाता है। यह थी एक छोटी सी कहानी। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। So children, let us read the chapter, and I want all to you repeat after me clearly and loudly. So let's read. The name of the chapter is The Hungry Bear. A little bear
is hungry. He goes to the market. There are many things to eat in the market. The little bear does not want a mango. He does not want an orange. He picks up a big watermelon. This will fill my tummy, he says. He eats the watermelon. Now my tummy is full. So children, let's read again. A little bear is hungry. He goes to the market. There are many things to eat in the market. The little bear does not want a mango. He does not want an orange. He picks up a big watermelon. This will fill my tummy, he says. He eats the watermelon. Now my tummy is full. Children, now you have to write some hard words 3 times each. So let's write. Hungry. H-U-N-G-R-Y. Hungry. Market. M-A-R-K-E-T. Market. Eat. E-A-T. Eat. Bear. B-E-A-R. Bear. Mango. M-A-N-G-O. Mango. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. Pigs. P-I-C-K. Pigs. Big. B-I-G. Big. Watermelon. W-A-T-E-R-M-E-L-O-N. Watermelon. Tummy. T-U-M-M-Y. Tummy. Full. F-U-L-L. Full. Yummy. Y-U-M-M-Y. Yummy. So children, that's all for today. Thank you. Bye bye.